supports, is standing with India against this terrorism. And this is the message we want to give to the entire nation. I think how UAE or the other nations, our delegations are in Japan also. From Japan also we are hearing the same story. Japan has also appreciated our message, that is zero tolerance against terrorism. Japan is also standing in solidarity with India. So, we as a delegation, we belong to different parties. Some are from opposition, some are from treasury benches, but still we are united. We are as one, giving a message that in this situation, we stand as one, united to fight against terrorism. I can give you a number of examples where these terrorist attacks have happened in India over a period of time. We suffered this for 4 decades. Mumbai serial blast, Mumbai 26/11, Pathankot, Pahalgam, and so on. But after this Pahalgam attack, we responded. We responded with restraint. We attacked only the military outfits, the military camps. The terrorist hideouts, terrorist camps. 9 terrorist camps were destroyed. Out of that, 3 were headquarters of Lashkar-e-Toiba, headquarters of Jaish-e-Mohammed, that was Muridke, Bahawalpur, and Muzaffarabad. And also these terrorist camps were named by UN. They were named in USC meeting. So, this has happened over and over again. When earlier attacks took place, international investigation also happened. We invited Pakistan to India. We gave them evidences. We gave them evidences of the terrorists. The DNA samples were also given. Evidence were given of Pathankot attack. Evidence were given of Mumbai attacks. But still, no reaction from Pakistan. What does it mean? It means that Pakistan, the terrorist organizations, the terrorists work hand in hand. This is very important for the entire world to know. A country that is harboring terrorism, supporting terrorism, and after this reaction, as in Operation Sindoor, the next day, everyone must have watched the funeral. Who were present in their funeral? The terrorists which were killed, the army personnels, the terrorists itself, they were all present in the funeral. What is this message? I think this has to be taken very seriously. Rauf Azhar is a named terrorist who was also present there. And the army personnel were present, and the terrorists, the family and all were wrapped in the national flag in their funeral. So, I think this is the time. Now everyone should stand and fight unitedly against terrorism. Because it will not be restricted to India alone. It is spreading to the entire world. So we are here to give a simple message, straight message, that we acted with restraint, but we have a strong message. We gave a strong message by doing Operation Sindoor, that there is also a threshold level of India. India is the one nation that has initiated dialogues time and again.
there are many examples where our prime ministers visited Pakistan, did a Lahore declaration, but after Lahore declaration happened Kargil, where our honorable prime minister visited Pakistan and again there was backstabbing from Pakistan. So every time we initiated a discussion, we initiated a dialogue, but it was the answer given to us was with the terrorist attack. I think their only motive is to destabilize India, the India which is progressing economically, where the prosperity, where everyone is going ahead. I think it is very much important to understand that in the geopolitical region, in the Indian subcontinent, if you see, India is only one nation that is stable, that is going ahead. We are the 5th largest economy, we will be the 3rd largest economy very soon, after US and China. And if you see the nations around, you see the nations, Pakistan is there, Bangladesh is there, Afghanistan is there. What happened to these nations? Sri Lanka there, what happened to these nations? Maldives is there, what happened to this nation? But India is progressing, soon to be the 3rd largest economy. So I think this all has to be thought of, and we always reply with a restraint. Every time there is a terrorist attack, we initiate a dialogue. This time also, this ceasefire happened on the request of Pakistan. There was no third party interest or third party intervention. So we are here telling to the entire world that our message to the entire world is zero tolerance against terrorism. The entire world, the other nations should stand firmly with India. And as in UAE, the UAE is standing firmly with India. Thank you very much. Thank you, sir. With your permission, I'll open the floor to questions. Anybody? Please. Wait. Good afternoon. I'm Nandini Sarkar from Khalij Times. My question is, how important is intelligence sharing amongst countries when it comes to fighting terror? Or terrorist activities for that matter? See, we have a very good relationship with UAE also. And this is the practice going on for a very long time, where intelligence sharing is happening between the two nations. This is how we can fight terrorism. And we have a strategic partnership with UAE already, and other nations also around. So this is what is happening all around the world. And it is very much important to stop this kind of terrorist activities. Hi. Good afternoon. I'm Sonia Kriplani from Asian Light and the London News Daily. My question is, whenever we've had a skirmish or a problem between India and Pakistan, we've seen it spill on the streets here, whether it was the riots during the Babri Masjid, and even recently there was something that happened in the labor camps. How do you then mitigate it and make it safe for even the Indian laborers, where they have to face and go back to the same bed and share a room with the Pakistani laborer who may not be so well informed? We've already seen some fallout right now. Ever since Pahalgam attacks, the terror attacks happened, we have not come across any incidents of the kind which you are mentioning in the UAE. In fact, it's remarkable that with the support of the UAE government and also restraint on both sides, we have not come across any such incident here. But is there any way to mitigate it in case of such incidents happening? Because I was here when Babri Masjid happened and I knew what happened on the street.
Well, I think you are talking too much back in the past. It's a mitigation. Well, we have not come across any such incident, nor have we come across any signs of anything like this happening. Indian community here is a very mature community, and the kind of environment this country has provided, an environment of peace, harmony, and tolerance, I think that's a very important ethos of this country, in which the government believes, the UAE government. And this is one element which has come out very clearly in all the meetings of our parliamentary delegation with the UAE side. Hi, my name is Jamaluddin from Kairali News. It's very happy to see you all here for a great mission for our nation. You met so many dignitaries, ministers here. So how is the response from there? And do you have any joint plan against terrorism? Thank you very much. Your question is very relevant and significant. As far as response from these places where we have gone, it's very inspiring. We really appreciate the wholehearted cooperation on the part of this great country. You're all aware that India have always maintained a peaceful coexistence. We have given tremendous contribution for the welfare as well as progress of the country as well as for peace-loving nations. Our initiative was highly appreciated. Selecting this team, all the teams are doing wonderful work. For us, we are very happy because relation with India and our UAE is very, very encouraging. Always it is quite normal. Not only that, as correctly mentioned by your chairman, this is the first country which called us and declared wholehearted support. There is another similarity also. That is, this country and India, as far as peace-loving countries, have many bright records. You all know that this country is having a ministry exclusively for tolerance and coexistence. Similarly, one great thing I would like to tell you, a lot of Indians, lakhs and lakhs of Indians are here. They have realized how nice is the behavior of the kingdom here. You are all lucky in that. In that way also, we are really proud to be in this mission. It is a noble journey we are making. And as correctly mentioned by our leaders, Chairman and Halwalji and others, it is very clear that India, all Indians can be proud of it because we are fortunate to have born in the birthplace of Mahatma Gandhi. The tradition is also kept, always honored that. People like you fully aware. So what we are thinking is, this crooked method of Pakistan should have an end. As correctly pointed out by our leaders, they were doing all this kind of cruel deeds. We all know that. So India has warned them several times not to do this kind of things. They have mentioned the things, I don't want to narrate it further. One thing is there, when this thing happened in Pahalgam, we told, look here, we will give you befitting reply. And that would be strong. You cannot even imagine the gravity of it. That we said. We waited for some time also. Finally, as correctly mentioned by your leaders, what happened? They broke all the decency. What India did, in spite of all these things, India maintained the status and the decency. As mentioned by the leaders, India stood very strongly as well as it was a best fight we did. We can be proud of it. At the same time, we maintained certain decorum. So as correctly mentioned by them, India was quite helpful for the civilians. Whether it is fight or anything, India kept its word like that. So in this case, what we are suggesting is, we have to develop this trend. India and this country like that, in the other places also we have said that this message of peace should be there. There should be joint worldwide movement to fight against this terrorism. Thank you very much. Hi, I am Sahil from Asianet News Channel. Though it wasn't a full-scale war, it was a war of informations.
majority of them was misinformations and propaganda. So, could you please tell me how important is to tackle all these propaganda, and what are the evidences we have given before the nations we are visiting about these misinformations and propaganda from the sides? Thank you for the question. There are basically 4 or 5 areas that we generally share when we are actually doing it. Of course, the first being the incriminating evidence that clearly shows up between Pakistan and the terrorists. Now the question is how? What is it? What Honorable Member of Parliament and leader of our delegation, Dr. Shrikant Eknath Shindeji, spoke about. We all know that for Lashkar-e-Toiba, because it has come under the United Nations Security Council and its monitoring on various, I don't want to go into the details because of a lack of time, so they started another outfit called as the TRF, the Resistance Front. After the attack, after the terrorist attack in Pahalgam, immediately the TRF came, and it's in public knowledge. They said, we have done it, they took responsibility of it. After having taken responsibility, when Pakistan realized, their handlers, their sponsors realized that word was coming out, and countries like UAE came out within an hour and said, we condemn this such human attack, and stood with India. That's when the world's thought process changed. And with the change of the thought process, Pakistan realized we have to now cover up. In cover up, they tried to cover up TRF, and TRF withdrew and said, we are not part of it. That's very uncharacteristic of TRF. The second incriminating where Pakistan gets caught. United Nations Security Council brings out a resolution on 25th of April 2025 condemning this attack. And there, the name of TRF is to be used, because TRF was the organization in the draft, in the resolution. And when TRF's name was to be mentioned there, on the floor of the UNSC, Pakistan tried its left, right, and center to somehow ensure that TRF's name is dropped from the draft of that resolution. Why? What is the linkage? What is the evidence that has to be hidden by Pakistan on the floor of the draft of a resolution by mentioning of TRF? That's the first. Second, when Operation Sindoor was launched, did we go and attack the army bases of Noor Khan? No. Did we go and attack the civilians of Pakistan? No. We attacked specifically 9 places of terror hubs, and 3 of them, as Shrikantji said, are already mentioned as terror sites by the UNSC Monitoring Committee. Lashkar-e-Toiba's headquarters are in Murid-ke. Is it not known to everyone in the circles? It is. Bahawalpur is the recruitment site for Jaish-e-Mohammed. Is it not a fact? Is it not a fact that when the funeral of those terrorists was being done, the rituals were being conducted by a known terrorist who has already been named by Shrikantji? Is it not a fact that in public domain, the photograph that came out, that those terrorists were wrapped in the national flag of Pakistan with the Pakistani generals, their officers, their rangers standing in full attention? Is it not a fact that Pakistan repeatedly, whenever we have provided evidence to them, have never given us back anything as far as the dossiers are concerned? Is it not a fact that despite we expecting Pakistan, after targeting the terrorists, we said we did not attack you, we respect you, to now respect our decision? What was the need for Pakistan to come after the civilians? What was the need of Pakistan to come after our air bases? Did we strike our air bases first? The air bases? No. We never went after them. They could have said, yes, you hit Murid-ke, you hit Bahawalpur, terrorist sites, we appreciate and respect, POK, Pakistan, Muzaffarabad. End of story. It would have ended there. We did not come with first strike. Pahalgam was the first strike. Our response of Operation Sindoor was a response to the first act of terror that was perpetuated on our land. That's the reality. Many such incriminating aspects are in public domain. And unfortunately, Pakistan is unmasked because of this. They do not know where to hide because the legs are showing. And therefore,
And when we speak about it, I just quickly take 2 minutes and I'll close. His Highness Sheikh Nayan Mubarak Al Nayan was the Minister of Tolerance and Coexistence. His Excellency Dr. Ali Rashid Al Naumi was the Chairman of Defense Affairs. And also, he's a good friend because we meet him and his colleagues at the Inter-Parliamentary Union twice a year. And whenever spoken to, wherever we talked about, they said an attack on India is an attack on UAE. We share common ethos. Our ethos are of non-violence. UAE stands for peace and non-violence. These are the words which you said, ma'am, about mitigation. These are the words that are actually touching the hearts of 4.3 million Indians who believe that here is a country of UAE, that we are sitting here, and this is a country that gives out a message for the first time, immediately within an hour, that we stand against terrorism, we stand with India. That is the mitigation. It shows the courage, it shows the conviction, shows the harmony. Hi, good evening. My name is Elvis Chumar from Jahin TV channel. India and UAE have a very good relation for the last many decades. Part of that scenario, I'll ask you one thing. Did the UAE have submitted any formula or any amicable solution package to India for reduce this crisis? See, we are here to give a message and sensitize the nations. So we are here to give a particular message that is against terrorism, and we have a bilateral relationship with UAE for a very long time. Through this To add here that the UAE stands very firmly with India tolerance for terrorism, and also equally clear that differences and conflicts and problems between India and Pakistan must be resolved through the principle of bilateralism, which is enshrined both in the Shimla Agreement and the Lahore Declaration, respectively, of 1972 and 1999, respectively. So there is no what you call external, intervention or mediation, and India and Pakistan must resolve these differences through a bilateral mechanism. The main point here is that when India and Pakistan look at the bilateral differences today, there are two issues that stand out first and foremost. Number one, it's terrorism, which Pakistan must abjure. And the second one is that Pakistan continues to occupy a large swathe of territory in the Indian state of Jammu and Kashmir, which is at the heart of the conflict. सर दिस इज शानीर फ्रॉम INS. कल हलूवालिया जी ने हिंदी को बहुत तारीफ किया, तो मैं हिंदी में पूछ लेता हूँ. एक जो क्वेश्चन सबसे बड़ा हम लोग फेस करेंगे आप लोगों की इस कामयाब ट्रिप के बाद, कि बाकी नेशनल्स जो ये पूछने, ऑलरेडी क्वेश्चन आना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे हमारे, कि व्हेन यू आर द विक्टिम यू रिटेलिएट, दैट वाज वेरी राइट मूव. नाउ व्हाई वी आर कन्विंसिंग टू अदर्स? व्हाट इज द पॉइंट? लाइक सबको पता है कि हमको प्रॉब्लम थी, हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमने रिटेलिएट किया, हम कामयाब हुए. नाउ व्हाई वी आर कन्विंसिंग टू अदर्स? अगर इसका जवाब हम सब एक पेज पे रहेंगे सारे मीडिया वाले, तो शायद एक जवाब जाएगा वर्ल्ड वाइड सारे सोशल मीडिया में, क्योंकि हर आदमी अगला जवाब देगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा. बेटर है कि एक जवाब आपकी तरफ से आए जो हम सारे मीडिया वाले बाकी नेशनल्स को जो है वही जवाब दें. बहुत सही सवाल किया आपने. आपके मन में ये आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, फिर आप दूसरे देशों में क्यों जा रहे हो? मेरे से मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आपने भारत के बारे में क्या क्या जाना है और आपके टीवी पर भारत के बारे में कौन कौन सी खबर आती है. उन्होंने जवाब दिया कि जब आपके यहाँ सुनामी हुई थी तो उस वक्त भारत का एक खबर हमारे नेशनल चैनल पे आई थी. अब ये घटनाएं जो घटती हैं आवाम को नहीं पता होती, या दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि आतंकवाद को जो पैदा करने वाले लोग हैं उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है. अपने लोग अपने अपने फायदे देखते हैं, व्यापार है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये देखते हैं. हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी. कहा था कि भूगोल ये है कि हम भारत हैं और वो पाकिस्तान है.
ये भूगोल है। हम भूगोल को तो बदल नहीं सकते, किंतु हाँ इतिहास जरूर बदल सकते हैं। इतिहास क्या है कि आज पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हम उसको बदलकर सीधा कर सकते हैं, या वो हमें बदल ले या हम उसको बदल ले। इतिहास तो तभी बदला जाएगा, और इतिहास बदलने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। हमने अपने तरफ से कोई पहल नहीं की है। आपने जो शब्द का प्रयोग किया ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं। 6 दिन पहले उनका निकाह हुआ था और वो हनीमून पर गए थे और उसकी बीवी को बेवा बना दिया और कहा कि जाकर कहो कि हम आए थे, हम ये कर गए। उसमें एक नेपाली सिटीजन भी था और बाद बाकी भारतीय सिटीजन थे। उसके बाद क्या हुआ है आपको पता है। नरेंद्र मोदी जी ने ऑफ द कफ तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा हम चिन्हित करेंगे, पता करेंगे कौन इसके मास्टरमाइंड है और किन्होंने ये घटना घटाई। हमारे विद्वान दोस्त संबित ने बताया कि टीआरएफ ने क्यों जो ही घटना घटी और तुरंत उन्होंने बयान दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम चिन्हित करेंगे, जानेंगे और हम ऐसी सजा देंगे कि आने वाली नस्लें भी उसको याद करेंगी। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 15 दिन के बाद ये घटना घटती है 6 तारीख की और 7 तारीख की रात को। जब उन 9 ठिकानों को चिन्हित कर लिया तो ऐसे मिसाइल्स भेजे गए जो सिर्फ उस बिल्डिंग को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहां बैठे आतंकवादियों को यह भी पता लगा लिया कि कौन कौन आदमी वहां पर है और उसको ध्वस्त किया। और ध्वस्त करने के बाद 7 तारीख के दिन पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे विदेश सचिव ने क्या कहा कि हमारा निशाना पाकिस्तान की आवाम नहीं थी, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान की आवाम से नहीं है और ना ही पाकिस्तान के आर्मी के ठिकानों से थी। हमारी दुश्मनी हाल के फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी के साथ भी नहीं है। हमें तो उन दस्युओं को मारना था। पहले जो नमाज अदा की जाती है उसमें शरीक था और आर्मी के जनरल वहां पर शरीक थे। ये तो आप लोगों ने भी देखा। और देखने के बाद में तब क्या कहता है, कहने की बात है ना कि अगर कई बार कोई आतंकवादी घटना घटती है तो मारा जाता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान को कि इसको ले जाओ, इसको सुपुर्दे खाक करने के लिए आप ले जाइए, चिन्हित करिए, ले जाइए। वो कहते हैं नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ये हमारा नहीं है। किंतु यहां तो उन्होंने सारा बंदोबस्त किया। तो क्या साबित करता है? ये साबित करता है ये हमारे बंदे थे, मारे गए तो हमने उनको सुपुर्दे खाक किया और उसके लिए हमने नमाज अदा की। तो ये सब करने के बाद में दूसरे दिन रिएक्शन जो दिया उन्होंने जिस तरह से ड्रोन का और छोटी मिसाइलों के अटैक किए, ये तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि उनके भेजे हुए ड्रोन और भेजी हुई मिसाइलें हमने हवा पर ही ध्वस्त कर दी और वो खेतों में इधर उधर गिरे। किंतु उन्होंने निशाना बनाया हमारे आम जनता को। ये नहीं कि कोई आर्मी इंस्टॉलेशन पर वो भेजी थी, पर आम जनता को। जहां तक कि कश्मीर में पुंछ में एक गुरुद्वारे की बिल्डिंग को ध्वस्त किया, जहां पर वहां का ग्रंथी और दूसरे जो दर्शनार्थी थे उनका देहांत हो गया, जो ठहरे हुए थे गुरुद्वारे में, और एक मंदिर पे किया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी ठिकाना बनाया, निशाना बनाया। तब हमने जवाबी कार्रवाई में उनके खिलाफ कार्रवाई की। किंतु उसके बाद हमें जरूरत समझ आती थी कि क्योंकि सारे देश के जितने मुल्क हैं, भारत के साथी हैं, उन्होंने इसकी निंदा की, भत्सना की जो कुछ हुआ है पहलगांव में। और कुछ लोग वहां गए कर जमीन में जाके देख के भी आए। जो अमजद ताहा एक अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, यूएई के नौजवान हैं, वो अपनी टीम लेकर गए, बकायदा वहां जाके मुआयना किया,
वहाँ के लोगों से बातें की और उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट किया या लिखा या अपना भाषण दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को बताने की जरूरत है पूरे वर्ल्ड में। कुछ लोग मुखर होकर इसकी निंदा कर रहे हैं पहलगाम की घटना को, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भैया काहे हम इसके पजड़े में पड़े, हमारी अपनी समस्याएं हैं। किंतु अपनी समस्याएं हैं, किंतु पड़ोस मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज जो आग लगी है, आज हमारे यहाँ कल को आपके यहाँ भी आ सकती है, तो इसको जानना जरूरी है। हम अमन पसंद हैं, हम सारे विश्व में अमन चाहते हैं, और वो जमाने चले गए कि हम लोग घोड़े पर सवार होकर दूसरे मुल्कों पर चढ़ जाते थे और लूट लेते थे, इन्वेजन कर लेते थे। आजकल ये जो काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसको रोकने का तरीका यही है कि पूरी दुनिया के लोग एक नई सोसाइटी में न्यू नॉर्मल को लेकर रहे हैं, जहां पर बम के धमाके, ग्रेनेड के और शेलिंग का नहीं, पर नॉर्मलसी पे। जब डायलॉग से सारा कुछ समस्या समाधान हो सकती है, तो उसमें क्या दिक्कत है। लोगों को मार के कोई समस्या का समाधान ना हुआ है आज तक, और ना आगे होने वाला है। तो इसलिए घरों के चिराग बुझाकर क्या होना। तो हम सब जगह जाकर अपनी बात कह रहे हैं, और हमने जो यूएई में पहला दिन गुजारा है, वहां तो हमने देखा कि 2 दिन से उन लोगों ने हमारे सवालों को बहुत सराहा और अपने तरफ से आगे बढ़कर 4 बातें और भी कही जिसकी उम्मीद हम नहीं करते थे। वैसी बातें उन्होंने भारत के पक्ष में कही। धन्यवाद। बस इनको ऐड करने के लिए बस एक चीज, आपका जो पॉइंटेड क्वेश्चन था, क्यों हम जा रहे हैं। उस घटना के बाद पाकिस्तान ने एक बहुत ही गलत ढंग का नैरेटिव बनाना शुरू किया, लोगों को गुमराह, पूरे विश्व को गुमराह करने का प्रयास किया, और अलग अलग तरह की बातें हिंदुस्तान के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। तो हमारा एक ये भी मकसद, हालांकि आपसे हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया है, आप असलियत जानते थे, यूएई असलियत जानता था, तुरंत आपने कंडेम किया, आपसे जितना सपोर्ट होता है वो आपने किया, कल से डिस्कशन में मालूम भी हो रहा है। लेकिन ये सच्चाई जो है, ये सच्चाई, ये ट्रुथ पूरी दुनिया के सामने हमको लाना है। आप आज देखें कि ये जो अभी डेलीगेशन आप देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ये डेलीगेशन है। चूंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेज आपस में होते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने समझा कि जो सच्चाई है उसको पूरी दुनिया के सामने लाना है, और इसी मकसद से सारा हिंदुस्तान, वो आपने देखा होगा, ओवैसी साहब भी हमारे नेता हैं, अभी बशीर साहब आपके सामने आए हैं, ये किसी हिंदुस्तानी को, हमारे हिंदुस्तान में आपको मालूम होगा पाकिस्तान में जितने मुस्लिम हैं उससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम रहते हैं। हमारा देश डाइवर्सिटी का देश है, हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ हर एक रिलीजन का, हमारा कोई रिलीजन से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन पाकिस्तान, यूएई का हम सम्मान करते हैं, यूएई हमारा सम्मान करता है। यह रिलेशन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारा रिलेशनशिप बहुत मजबूत हुआ है, आगे भी होगा। तो ये सच्चाई सामने पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के सामने करें, ये इसी पर्पस से ये डेलीगेशन आया है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान के लिए और किसी के लिए कोई गलत बात करने आए हैं। पाकिस्तान भी शांति से रहे, हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी अगर फलेगा फूलेगा, वहां भी शांति रहेगी तो हमको अच्छा लगेगा। यूएई में हमारे नागरिक हैं 40% से ऊपर, यहाँ पे सब तारीफ करते हैं आपके देश की, सभी सुखी हैं, सभी शांतिपूर्ण रह रहे हैं, सबका अपना रोजी रोटी चलता है। पाकिस्तान भी अगर शांति से रहे, बढ़िया से रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत क्या है, अभी विश्व में हम 5वें आर्थिक शक्ति बन गए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये जलन जो हो गई है, ईर्ष्या की भावना जो पाकिस्तान को हो गई है कि भाई ये आगे बढ़ गए, अरे अपने यहाँ टेररिज्म करोगे तो कहाँ से बढ़ोगे। शांति और विकास दोनों का
बहुत अन्योन्याश्रय संबंध होता है। तो आप शांत रहोगे तभी विकास होगा। हमारे यहाँ शांति है, हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ विकास हो रहा है। अब उनको ईर्ष्या हो रही है, कोई दूसरा मसला नहीं है, कोई दूसरा इशू नहीं है। तो यही संदेश हम पूरे विश्व को देने आए हैं। Yes, Good please. afternoon. I'm Suresh from Madhurabhumi TV channel. Actually, you came here with a message, and you met the minister and diplomats, officials. Do they raise any doubt about the Pakistan's role and India's stand? If so, did you show any evidence to clear them? Thank you for that question. Good evening. Thank you, Dr. Shinde, and I'm very grateful to friends of the media for taking out the time to come and see us. That's a very pertinent question, and I'm delighted to say that the single answer is no. There is absolutely no doubt in the minds of the leadership of the UAE regarding the role, the diabolical role of Pakistan in the Pahalgam terrorist attack. And I'm delighted to say that not only has the UAE been a solid friend to India, it has shown us unequivocal support in condemning the acts of terrorism against our nation. And that resonated in every single interaction that we had yesterday. Ladies and gentlemen, we have been very fortunate that even though we've been here only a day, it was a very jam-packed schedule, and we had the opportunity of interacting with diverse facets of this country. We met Sheikh Nayan, His Royal Highness. So we met the royalty. He is, of course, the Minister of Tolerance and Coexistence. We met with people who are influencers. We met with the diaspora. We met with people who interact with media. So it was at different levels of engagement. And what is extremely heartwarming is the unequivocal support that India received in unanimous tone. There was no diversion, there was no diversification of tonality. And I must chime in what our leader of the delegation, Dr. Shinde, has said. This delegation comes here, especially to the UAE, not only to spread a message of peace and tolerance. We actually come here in gratitude. We come in gratitude for the solidarity and the friendship that has been shown by the leadership of UAE. Not only the moment the terrorist attacks happened, their support continued during the undertaking of Operation Sindoor. And now that Operation Sindoor has been a success, yesterday we met, the support was overwhelming. Thank you. One more. Can I ask you one thing? Just for okay, before you mentioned that, I just asked you one thing. I don't think. The non-residents Indian, Elvis Kumar from Jahin TV channel once again. Non-residents Indians are the real ambassadors and real face of India, especially out of foreign countries. Compared to other countries and other Gulf countries and as well as foreign countries, UAE is a very strong Indian presence. So what do you have any plan? What is next follow-up? Are you offering any special responsibility for NRIs in UAE? What are you maintaining the relation and follow-up of what reduce the crisis? Thank you for that question. So first of all, as I was just sort of adding something to what was in my previous answer, when I was talking about unequivocal support, I think a member of one of my colleagues has already said this, but I must reiterate. Yesterday, His Royal Highness Sheikh Nayan said an attack on you is an attack on us. And I think that gives great solace to the Indian diaspora here as well, especially because he's somebody who has been like a guardian angel to the Indian diaspora in this country. When we interacted with the Indian diaspora, what came out from the interaction was that each and every member of the Indian diaspora is in themselves a social economic movement and an ambassador for India that are actually going to take the word forward. Thank you. Hi, sir. Gopis Brahma from ZTV. If you want to send a message to the people of Pakistan, what kind of message you want to say?
because normal people are suffering because of the terrorism, not only Pakistan, all around the world. So that's the reason that this question. See, this has already been said. The message to Pakistan or the message to the entire world is against terrorism. Pakistani people should also understand what is happening in their nation, who's supporting the terrorists, who's supporting the terrorist organizations. From 1947 till 2025, I think a vast difference between the two nations you can compare. The progress which is happening in India, the economy, everything. Pakistan's economy is lower than the Bangladesh economy. Bangladesh, liberated later, is ahead of Pakistan. So Pakistan citizens should understand how are the leaders acting, how are the leaders making breeding grounds for the terrorists. And I think ultimately जनता अगर पाकिस्तान की चाहे तो पाकिस्तान में अच्छे दिन ला सकती है. जिस तरीके से इतने सालों तक टेररिस्ट को पनाह देने का काम, आजू बाजू के देशों में हमला करने का काम पाकिस्तान ने किया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है वहाँ की आवाम को भी समझना और उसी के साथ में बाकी दुनिया के देशों को भी समझना. आज जो आप बार बार यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों हैं, मुझे लगता है कि हमारी भी सहनशीलता का एक अंत हो चुका है इस पहलगाम के हमले के बाद. जब तक हम जाएंगे नहीं, जैसे आलूवाले जी ने कहा कि यहाँ का जो देश है, यहाँ की जो मीडिया है वो इस देश के बारे में ज़्यादा बताती है. जब हम जैसे लोग बाहर जाएंगे, हमारे देश के बाहर दूसरे देशों में जाएंगे, तभी हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है, इसके बारे में यहाँ पर भी चर्चा होगी. हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं. आज हमको भी, आपको भी मिले, आपके माध्यम से और लाखों लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे. कल हम इंडियन डायस्पोरा से मिले, उनके माध्यम से और हज़ारों लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे. तो ये एक मैसेज है, ये मैसेज, क्योंकि आज टेररिज्म सिर्फ हमारे देश में टेररिज्म नहीं है ऐसे बोल के चलेगा नहीं. कोई सोचता होगा कि हमारे देश में टेररिज्म नहीं है, हम उसके बारे में क्यों सोचें. ये जो टेररिज्म है इसके खिलाफ लड़ाई हम सबको लड़नी होगी. ये मैसेज देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं. Thank you, sir. I think honorable members have given very detailed explanation about their interactions and the purpose and the outcomes of their visit. और सर, मैं ऐड कर रहा हूँ श्रीकांत जी को, ये शिंदे जी को. आपने पूछा कि पाकिस्तान की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो पाकिस्तान की जनता से ये पूछना चाहेंगे कि पिछले 75 सालों की आज़ादी के बाद एक भी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं किया. क्या कारण है कि कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ ऐसा नहीं है जिसे जेल ना हुई हो, चाहे वो आज इमरान हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो अपने इनकी मदर, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होता जिसको वहाँ जेल ना होती हो. एक दो को तो फांसी भी हो गई, ठीक है. तो उसके पीछे जनता से ये पूछना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में वो क्या वो फर्क नहीं कर सकते. क्या उनके दिमाग से जो कश्मीर का एक जहर भर करके, एक नफरत भर करके जो वो डिसीजंस लेते हैं, तो उन्हें अपने डिसीजंस के बारे में सोचना चाहिए. पाकिस्तान की जनता को हम ये कहना चाहेंगे. ये जो डेलीगेशन हमारा आया है इससे ही प्रमाणित होता है कि ये भारत का डेलीगेशन है. हमारे इस डेलीगेशन के जो नेता हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये शिवसेना के, और शिवसेना घोर विरोधी है मुस्लिम लीग की. ईटी मोहम्मद बशीर साहब उनके बाएं बैठे हैं,
वो भी इस डेलीगेशन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हमारे बाएं सस्मित पात्रा जी बैठे हैं, ये बीजू जनता दल के, ये भी हमारे पक्ष के नहीं। और माननीय सुषमा जी की बेटी मासुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। हमारे अतुल गर्ग जी गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मनन मिश्रा जी हमारे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच हूं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये भारत की एक टीम है। सबकी आवाज, हमारे में जितने मतभेद होने के बावजूद भी, बशीर साहब ने जो सवालों का जवाब दिया आपने सुना, कितने साफ साफ लफ्जों में कहा। लगा क्या आपको कि मुस्लिम लीग बोल रहा है? उन्होंने हमसे ज्यादा कड़े शब्दों में पाकिस्तान के इस आतंकवाद के खिलाफ अपने अल्फाजों को लगाया। इसको समझने की जरूरत है और यही आज का आपके सारे सवालों का जवाब होता है। और हमारे अतुल गर्ग जी ने तो सब कुछ बता दिया आपको, पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी बता दी है। धन्यवाद। We'll request sir to give the closing remarks. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि सभी लोग इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिले होंगे। ये डेलीगेशन यहाँ पर क्यों आया, ये डेलीगेशन इससे आगे अफ्रीका में जाएगा, अलग अलग देशों में। देश छोटे हो या बड़े हो, सभी देशों को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और सभी लोग एक आवाज़ में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सभी लोग एक क्लियर कट मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे देश के 140 करोड़ जनता की आवाज़ है, वो हम अलग अलग देशों तक पहुँचाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैसेज यहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि अभी टेररिज्म को सहा नहीं जाएगा। टेररिज्म के खिलाफ भारत ने जो कड़े कदम उठाए, इससे भी कड़े कदम उठाने की अगर नौबत आई तो इससे भी कड़े कदम उठाने का काम भारत करेगी। ये मैसेज भी पूरे दुनिया को जाना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा कि अब एक न्यू नॉर्मल है, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज बहुत ही सटीक है, बहुत ही क्लियर है कि अभी बातचीत, अगर टेररिज्म को ख़त्म करोगे तो हम बातचीत करेंगे। टेररिज्म के खिलाफ अगर कदम उठाओगे तो हम आपसे बातचीत करेंगे। ये देश अब हमेशा की तरह सिर्फ सहन करने वाला देश नहीं, ये रिटेलिएट करने वाला है। ये रिस्ट्रेंट के साथ रिटेलिएट करने वाला, जिम्मेदारी के साथ रिटेलिएट करने वाला है। जो जिम्मेदारी हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई, तो आने वाले समय में भी अगर पाकिस्तान से ऐसे कुछ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो उसको सटीक जवाब देने का काम हमारा देश करेगा, हमारी सेना करेगी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में किया है। तो हम आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद अदा यहाँ पर करते हैं। यूएई का धन्यवाद अदा करते हैं। यूएई की सभी जनता हो और उसी के साथ में अलग अलग हमारे डिग्निटरीज हो, मिनिस्ट्रीज हो, अबू धाबी और दुबई, क्योंकि पूरे ताकत से सबसे पहले हमारे साथ खड़े होने वाला देश यूएई है। और आज जब हमसे उनसे मिले, जैसे आलूवालिया जी ने कहा कि हमारी अपेक्षा से भी ज़्यादा उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने खुद से कुछ ऐसी बातें कही कि वो बातें हम आपसे ओपन पब्लिक फोरम में नहीं कह सकते। इतनी ईर्ष्या उनको टेररिस्ट के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है। तो ये टेररिज्म की लड़ाई ऐसी ही जारी रहेगी। टेररिज्म के खिलाफ आज यूएई में है, कल से हम अफ्रीका में होंगे, अफ्रीका के अलग अलग देशों में हम इस टेररिज्म के खिलाफ ये लड़ाई, ये जंग जारी रखेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. That concludes the media interaction. Thank you, media friends, for joining us.
This is the message against terrorism. We are carrying it and giving it to the whole world. I think each and everyone sitting here also has roots in India. You also know the history of India. You also know the relationship with the neighboring nation. We are a peace-loving nation. We come from a land of Gautam Buddha, Mahavira and Gandhiji. We never initiate.